we are going to talk about friction. So what I want to do is first I want to tell you the microscopic reality behind friction, and then we'll move on to हाँ मैं इसके एंड में मैसिव वाला स्ट्रिंग, इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, मैं इसके एंड में करा दूंगा ना, बट ये बहुत इंटेंस टॉपिक है, तो इसको पहले खत्म मैं करा देता हूँ. ये हफ्ते खत्म हो जाएगा. तो first I will show you the microscopic reality of friction, and then we'll move on to how to numerically tackle, how to apply the maths. The maths is not very difficult. First, let's talk about the theoretical part. So now we are taking our first steps from the ideal world that we discussed, that we have been discussing up till now, into the real world. But please remember, this is only the first step, right? This is the first complication of real life that I'm introducing. So we have a block which is kept on the floor, and I am going to apply a force on the block, right? So what is going to happen? So what I will do is that I will look at a very small part of how the block is interacting with the floor. And I'm going to zoom it here. So it turns out that however smooth your senses might tell you a surface is, in reality that surface will be extremely rough. Because at the end of the day, the molecules themselves, the atoms themselves, they are not smooth. So the way to think about this is that our our senses are too crude to pick up these tiny irregularities. Even if you have a highly polished steel surface, for example, and if you were to touch the steel surface, you would think it is very smooth. Your senses will tell you it is very smooth. But if you look at the microscopic picture of that surface of the steel, it is going to be extremely rough, extremely jagged. So the surface of the floor, which is in appearance very smooth to us, when magnified, the surface will look something like this. So this is the surface of the floor. And at the same time, the block, which may appear smooth to our senses, will have another, will be rough like so. So this is the surface of the block. Please notice one thing, that I have drawn the two surfaces in such a way that they are not touching each other. Right? And remember, I told you that the fact that your chair is on the floor, the legs of your chair are on the floor, does not really mean that they are touching the floor. In a microscopic picture, there is a small void, there is a small gap
between the bottom of the legs of your chair and the floor, and the interaction that they are having. The floor is applying a force on the chair is applying a force on the floor. This interaction is a consequence of the electrostatic repulsion which is happening between the molecules or the electrons of the molecules of the chair and the electrons of the molecules of the floor. Right. So similarly here, these hills and valleys, okay, let me call it hills and valleys, which are composed of these atoms and molecules, they are being repelled by the hills and valleys, which are again composed of atoms and molecules of the surface. So the electronic force, electrical repulsion between these set of molecules or the electrons of these molecules is the reason why this thing is not really touching these two surfaces are touching each other. So what has happened is that when I kept this block on this surface, then this phenomena occurs, which is called intermeshing. So there has been an intermeshing of the hills and valleys. So what do I mean by hills and valleys? Basically, I would consider this to be a hill and I would consider this to be a valley. So the hills and valleys of the two surfaces have intermeshed with each other. They have found some sort of a compromise, they have found some sort of a equilibrium. Now, if I were to start pushing this block, okay, then obviously the green surface would have a tendency to move in this direction. But the moment the green surface has a tendency to move in this direction, there will be a obstacle, right? And this obstacle would be that this protrusion of the upper surface would go and collide with this protrusion of the lower surface. Similarly, ये आगे बढ़ेगा तो इससे जाके बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो इससे जाके बढ़ जाएगा, and so on and so on. But remember that there is electrostatic repulsion happening here. So now, not only will there be a vertical force on the surface of the block, but there will be a horizontal force on the surface of the block as well, because we know that these atoms and molecules, they are bound together by electrostatic forces, and simply because this guy wants to travel in this direction does not mean that these molecules, they are going to give up their bond so easily. If, however, I keep on increasing this force, then at some point of time, either these bonds will break or these bonds will break. And when that happens, the surfaces will have relative motion between them. That means that the upper surface will begin to move. Right? So for motion to occur, either of, or maybe both, ऐसा भी हो सकता है, either of these bonds may break. हाँ, इतना डिटेल में नहीं शिवेन, बस एक मैं रफ पिक्चर दे रहा हूँ, अभी आगे की बात सुनो पहले. तो अगर आप अपने पेन को, फॉर एग्जांपल, यू कीप हॉरिजॉन्टली ऑन योर डेस्क, ओके, एंड आप अपने पेन को पकड़ो और उसको अपने डेस्क पे आप रगड़ दो, तो आप जब पेन को वापस से उठाओगे तो आप देखोगे कि पेन का कुछ पार्ट या तो डेस्क पे चला गया है या डेस्क का कुछ पार्ट पेन पे चिपक गया.
basically what has happened is that the moment you keep your pen on your desk, this intermeshing between the surface of the pen and the surface of the desk happens. And the moment you move your pen, the bonds, ये जो मैंने दो येलो लाइन बनाई है, either the bonds from the lower surface or the bonds from the upper surface they break. अगर ऊपर वाली लाइन से ब्रेकेज हुआ तो ये वाला जो पार्ट है ये गिर के यहीं पे डिसलॉज हो जाएगा, डिसलॉज यहाँ पे, सॉरी डिसलॉज बोलो, यहाँ पे लॉज हो जाएगा, ये वाला पार्ट गिर के यहीं पे रुक जाएगा, ये वाला पार्ट गिर के यहीं पे रुक जाएगा, और ये वाला पार्ट टूट के इसके ऊपर वाले सरफेस के साथ चिपक जाएगा, चिपक के चला जाएगा या गिर जाएगा यहीं पे, व्हाटएवर. सो बेसिकली इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घिस गया, राइट. आप अगर पेन को टेबल पे रगड़ते रहोगे तो यू नो दैट इवेंचुअली either the table will wear out or the pen will wear out. What is happening is that due to this intermeshing and then the subsequent breakage of these hills and valleys due to the motion, despite the intermeshing, bits and pieces, billions and billions of molecules of your pen are either lodging themselves in the surface, or billions of molecules of the surface are lodging in the surface of your pen. Depends which is made of the harder material. So this is the origin of friction, right? And as you will notice, there are two things which are important here. The first is that when I apply a force, okay, there will be a resistance generated because these bonds, they don't want to break. Okay? There will be a resistance because these bonds, they do not want to break, or these bonds do not want to break. But this resistance will have an upper limit. This resistance will not be infinite. And when that upper limit is reached, these bonds will break and motion will occur. Okay? So these are the two things about friction that we must understand. This is the microscopic explanation of friction. ये मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया. So now my question is, how will you increase the intermeshing? I want to increase the intermeshing. How can I do that without introduction of anything else, without getting another body here, without any other object in between the two things? How can I increase the intermeshing and how can I decrease the intermeshing? बताइए, please tell me, how can I increase the intermeshing? First of all, how can I increase the intermeshing? नहीं, नहीं भाई, बहुत ही सिंपल सा मुझे चाहिए. हाँ, प्रतीक्षा ने सही बोला. बहुत ही सिंपल सा, मेरे को सबसे सिंपल चाहिए. आप अपने कुर्सी से हट जाओ, ठीक है? आप अपने कुर्सी से हट जाओ और कुर्सी को पुश करो. तो जो आपको फोर्स लगेगी कुर्सी को मूव करने में, that is some force, right? You require some force. It will be different for everybody. Now you sit on your chair, पैर वैर ऊपर कर लो अपना. अब आप किसी और को बोलो कि हाँ भाई आप चेयर मूव करो. Will it be the same force? Will the same force be applied to move the chair now that you are sitting on the chair?
अब तो ज्यादा फोर्स लगेगा ना, क्यों ज्यादा फोर्स लगे? दैट इज व्हाट आई वांट यू टू विजुअलाइज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। इंक्रीजिंग मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हाँ ठीक है फर्क पड़ रहा है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हुआ? जब हम लोग चेयर पे बैठ गए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हुआ? हाँ, what has happened at the microscopic level? Look at the picture that I have drawn. क्या होएगा? ये intermeshing will increase. Intermeshing will increase. Yes, yes. Intermeshing will increase. So if you apply a force on the object in the downward direction, if you apply a force on the object in the downward direction, this will increase the intermeshing between the two surfaces. And how will you decrease the intermeshing between the two surfaces? How will you decrease the intermeshing between the two surfaces? How will you decrease the intermeshing between the two surfaces? Exactly, yes. All you have to do is apply a vertically upward force, and that will decrease the intermeshing. Adding water lubricant, ये तो है ही है, but I did not want to add anything here. So therefore, now you can answer a very simple question, hopefully, and that is that if I push the block and if I pull the block, so this is push and this is pull, which will result more easily in the motion of the block. Yeah. So, yes. So pull का मतलब हुआ, ये जो मैंने फोर्स का एरो बनाया है, पुल का मतलब हुआ यू आर अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड ए वर्टिकल फोर्स. पुश का मतलब हुआ यू आर अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड ए वर्टिकल फोर्स. So which will make it easier for for motion to occur? It will be the pull, right? Pull, push नहीं, push में तो धक्का अंदर दे रहे हो ना, intermeshing increase कर दे रहे हो. You are increasing the intermeshing. If you increase the intermeshing, then that's it. खत्म कहानी. Okay. चल. So now I want to talk about some maths. But before I do, मैंने दूसरे बैच को भी बोला है, आपको भी मैं बोल दे रहा हूँ. So whatever you learned in class 9th and 10th, okay, that was the amount of knowledge which was perfect for that age. Whatever we are going to learn now is whatever is suitable for our age. Okay. When your teacher taught you in class 9th and 10th, then they had a very limited scope of teaching. ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते थे, बिकॉज आप लोग को समझ में नहीं आता. So they have taught you something about friction. I am going to teach you some things which are having a greater scope. Therefore, whatever I teach will be different from whatever has been taught to you in class 9th and 10th. And when you go off to college, when you go into higher studies, then there the professor will teach something which is greater than the scope of what I am teaching. So the trick is, the thing is that you have to unlearn and relearn. जो भी आपको 9th-10th में सिखाया गया, उस पे आपको लैच ऑन नहीं करना है कि नहीं वही अल्टीमेट ट्रूथ है. जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस पे लैच ऑन नहीं करना है कि नहीं यही है बिल्कुल. Because the complexities they will they will always keep on increasing. So in class 9th and 10th, if you have studied that friction is something that opposes motion,
then you need to detach yourself from that. Okay, because I am going to show you that friction uh, can oppose motion, but it can also aid motion. So friction may be opposite to the direction of motion, but friction may also be in the direction of motion. In fact, later on, I'm going to show you that friction can be perpendicular to the direction of motion. So the hint that you should have got when you are studying friction for the first time is that if friction always opposes motion, then why do we put treading on the tires of cars? Why not have smooth tires? Smooth रहेगा तो friction कम रहेगा, opposition कम होएगा. So the fact is that it is friction which helps in the motion of the car. It also helps in stopping the car, obviously, but it also is responsible for the acceleration of the car. So when your car is accelerating, and we will discuss this in detail, when your car is accelerating, then friction is actually in the direction of motion, and when your car is braking, it is opposite to the direction. So later on, I will show you that friction may be perpendicular to the motion of the car. कार उधर जा रही है, friction perpendicular है. In fact, उसके बाद I will tell you that friction may have any direction with respect to the motion of the car. Friction may be at 37 degrees with respect to motion of the car. Friction may be at 53 degrees, 90 degrees, 120 degrees, 135 degrees. Any angle between 0 and 180 degrees with respect to the motion of the car. ठीक है ना? So friction is not as simple as it opposes motion. No, friction is more subtle than that. It has got more dimensions. It is more complicated than that, and I will in this set of lectures, ज़्यादा lectures नहीं लगेंगे, ये weekend तक हो जाएगा. I will show you how to handle this this concept of friction. So I am going to break this concept of friction into two cases. So case one is when one surface is fixed. ये फ्लोर है, ये फिक्स्ड है. ये ब्लॉक है, ये मूवेबल. राइट. तो मैं पूरे फ्रिक्शन की स्टडी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहा हूं. फर्स्ट इज when one surface is fixed, you want to move something on the floor, or maybe you want to move something on a wall. Floor and wall are two words that we use in physics to denote surfaces which are fixed. So whenever one surface is fixed, the following rules will apply, which I will tell you. And when both surfaces are movable, आप अपने अपने पेन को अपने हाथ पे रख लो और अपने हाथ को आप मूव करो, तो जो सरफेस ऑफ द पेन है और सरफेस ऑफ द हैंड है, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है. लेकिन इस केस में ये दोनों सरफेसेस मूवेबल हैं. राइट. सो मूवेबल वाले केस में अलग हम एनालाइज करेंगे, और एक सरफेस फिक्स्ड है वो अलग हम एनालाइज करेंगे. Now, when one surface is fixed, then also we will have two scenarios. So the first scenario, जैसा मैंने ये इसमें डायग्राम में एक्सप्लेन किया, the first scenario is that the block, the movable object, is not moving, or is just about to move, or just moves. Right? ये सारे आपको phrases
उसमें प्रॉब्लम्स में आपको मिलेंगे. So scenario 1 is that the block does not move, or the block just does not move, or the block just moves. ये सब इक्विवेलेंट है. ये सब का मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है. So when one surface is fixed, then we can actually have scenario 1 where the movable surface also does not move. Right? Movable surface भी move नहीं कर रहा है. तो इस केस में क्या है कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो सरफेसेस के बॉन्ड्स हैं, ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं. Okay? और सिनारियो 2 में विल डिस्कस कि ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं. Okay. So scenario 1 is this, and to describe scenario 1, I am going to define something which you have not heard, and I don't think you will find it in any book also. So I will define something called F applied force. F applied, that is the applied force. अब इस applied force का मतलब क्या है? इस applied force का मतलब है the net force which is parallel to the interacting surfaces except friction. Right? So we are not going to consider friction when we talk about applied force. We are only going to consider other forces, and we are only going to consider those forces which are parallel to the interacting surfaces. So I want to show you what I mean by applied force. Okay? Just by writing a definition, I don't think it is. I don't think anybody understands. So I am going to I'm going to ask you to do some questions now. So first one I will do because it is the easiest. मैंने कहीं Facebook पे पढ़ा था, टीचर जो है वो हमेशा easiest question करके निकल जाता है. So we have a block of mass m, and इसके ऊपर मैंने ये force लगाया F, right? And I ask you that please tell me what is the applied force. So what you will do is you will draw the FBT of the object, and the forces acting on the object are mg, then we have n, then we have F, and these are the interacting surfaces, right? So I want the forces which are parallel to the interacting surfaces. Forces which are parallel, net force which is parallel to the interacting surfaces. So therefore, I'm going to draw an axis here, simply like this, and I'm going to write that F applied is equal to F. Right? आया समझ में? Very very simple. मैंने FBD बनाया और मैंने एक एक्सिस बनाई जो इंटरैक्टिंग सरफेसेस के पैरेलल है, और उस एक्सिस पे जो भी फोर्स है दैट इज F applied. Right? So I want you to give it a try. Very very easy. बहुत आसान है. Please leave some space
because this is the first part of the question. We are going to have at least 3, maybe 4 parts, I think. Please tell me the value of f applied, and please remember to leave some space for each this thing. हाँ हाँ मतलब बहुत हाँ एफ अप्लाइड बताना है। हाँ बहुत आसान है. It's not yes, everybody is right. Yes. Good. Yes. इस केस में we have mg, we have n, we have f. ये इंटरेक्टिंग सरफेसेस हैं, तो ये हमारा एक्सिस हो गया, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे f cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे f sin थीटा आ जाएगा, और इस केस में f applied will be equal to f cos थीटा. इस केस में फोर्सेस आर mg n and then f then p. ये है इंटरेक्टिंग सरफेस हमारा, ऐसे रहेगा, एंगल थीटा इधर दिया है, तो ये एंगल थीटा इधर दिया है, तो ये हो जाएगा f cos, सॉरी, ये हो जाएगा f sin थीटा, और ये हो जाएगा f cos. So here f applied क्या हो जाएगा भाई f applied यहाँ पे थर्ड वाले में what will be f applied? थर्ड वाले में f applied will be well, you see there is a problem. Protection, very good. Yes. Yeah. So the problem is that I don't know which force is bigger. Is f sin theta bigger or is t bigger? I don't know. अगर f sin theta 1 न्यूटन है और t 10 न्यूटन है, तो f applied तो उल्टा हो गया 9 न्यूटन. लेकिन अगर f sin theta 10 न्यूटन है और t 1 न्यूटन है, तो फिर उल्टा हो गया, दाहिने तरफ हो गया f applied. So what I will do is I will write down f applied is equal to f sin theta minus t, or t minus f sin theta. You see, there is an ambiguity here. There is an ambiguity. This is a natural thing. There is an I don't know. You have to tell me the values of f, theta, t, so that I can decide what is going to happen, right? Okay. ये आ गया ना सबको समझ में? आपको समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही आसान. This is very there is no complication. It's just drawing FBD and telling me one component, one side of the force. Okay. Next.
Leave spaces. Yes, yes. Please leave spaces. Please tell me the values of F applied. F applied is it is just a uh, defined. It is defined as the net force acting parallel to the interacting surfaces, except friction. आराम से करो, तीनों करो, मैं बताता हूँ. कौन से वाले क्वेश्चन, कौन से वाले प्रतीक्षा, कौन से वाली बात कर रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? Which question are you talking about? Third part. थर्ड पार्ट में आई डोंट नो क्या होने वाला है ना. थर्ड पार्ट में आई डोंट नो क्या होने वाला है. अगर एफ अप्लाइड ये है तो टेंडेंसी इसकी राइट मूव करने की होगी, और एफ अप्लाइड ये है तो लेफ्ट मूव करने की होगी. So I draw the block mg n f, but now the interacting surfaces are this. Here are interacting surface. So I have to draw the axis like this now, and this will be angle theta, and this component will be mg cosine theta, and this component will be mg sine theta. So immediately I get f applied is equal to mg sine theta minus f, or it is equal to f minus mg sine theta. Okay, I'm not going to put a mod here because generally physics में I don't like to deal with modulus. So इस case में forces are mg n and f, and again the interacting surfaces are inclined. इसमें ऐसे बनेगा एक्सिस, ये एंगल थीटा होएगा, ये एंगल थीटा होएगा, so this will be f cosine theta,
this will be f sine theta, this will be mg cosine theta, and this will be mg sine theta. So in this case, f applied will be equal to mg sine theta minus f cos theta, or f cos theta minus mg sine theta. Finally, for this guy, the forces acting must be normal reaction mg and f. But this time मेरे को लगा पहले वाले का बोल रहा है हार्दिक. This time the surface is this. So I have the angle of f with vertical is theta, f cos theta, f sine theta. So we have f applied is equal to mg minus f cos theta, or f cos theta minus mg. Right? Okay. चलो, ये आ गया सबको समझ में. f applied क्या होता है? F applied can be a single value or it can have an ambiguity. There can be an inherent ambiguity in F applied. Clear है सबको ये? Anybody having doubts now at this point? Anybody having doubts at this point? वो Shivan, forget about choosing the wrong direction right now. तेरे को ये समझ में आया ना कि ambiguity है? हाँ, बस अभी इतना ही समझना है कि ambiguity है. वो ambiguity resolve कैसे होगी ये मैं बाद में बताऊंगा. Next, in the space that you have left, okay, we'll do the second part now. The second part हो जाएगा, then I'll come back for the third part. So in the second part, what you have to do is that assuming that the surfaces are always in contact. Okay. Find normal reaction in each case. Okay, so I'm telling you that the acceleration of the block perpendicular to the interacting surfaces is 0. That is why they are in contact with each other. Right. So for all the 6, find the value of normal reaction. पहला वाला मैं करूँगा. N, और ये क्यों नहीं लिख रहा है? N is equal to mg. Please do all the remaining 5. हो गया? So in the second one, the value of n, I hope all have found, is equal to mg minus f sine theta. Right?
यहाँ पे n will be mg minus f cos theta, right? यहाँ पे n will be equal to mg cos theta. यहाँ पे n will be equal to f sin theta plus mg cosine theta, and here n will be equal to f sin. ये आया सबको आंसर, छह आंसर आए सबके। Right. Okay. Good. Chalo. So now we are ready to move on to the next step. Before you do the third part of the question, let me just show you something. So when the when there is no relative motion between the surfaces, okay, when there is no relative motion between the surfaces, what I mean is this. The block does not move, or the block just does not move, or the block just moves. So when there is no relative motion between the surfaces, the friction is called static friction. Friction is called static friction. And in the second case, the friction would be called the kinetic friction. That would be scenario 2 of case 1. It would be called kinetic friction. So we want to talk about the magnitude and direction of static friction. Okay, so remember, जो भी मैं करा रहा हूं, मैं बार बार इसको बोलते रहूंगा, this is only valid for this, right? Only valid for this. Just like, if you remember, if you look at the course progression, it is always trying to tell you, the course is trying to tell you what is the magnitude and direction of forces due to different objects in the surrounding of the system. अर्थ की वजह से क्या होता है, स्ट्रिंग की वजह से क्या होता है, स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, यही हम सब स्यूडो फोर्स की वजह से क्या होता है, यही हम डिस्कस करते आए हैं, राइट? सो नाउ जो हमने पहले वाले लेक्चर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सरफेस की वजह से एक फोर्स की बात करी थी, नॉर्मल रिएक्शन की, नाउ आई वांट टू टेल यू द magnitude and direction of the other force applied by the surface on another, which is friction. So first I will talk about the direction. The direction is opposite to F applied. The direction is opposite to the direction of F applied. So this case, where is friction? Where is F applied? F applied तो ये रहा,
फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन ऐसे आएगा। आई विल डिनोट फ्रिक्शन बाय स्मॉल। सेकेंड वाले केस में फ्रिक्शन किधर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा। अब आप प्लीज नोटिस करिए, मैं फ्रिक्शन को एफबीडी पे बना रहा हूं, राइट। आई एम ड्रॉइंग फ्रिक्शन ऑन द एफबीडी इटसेल्फ। दिस इज द वे दैट यू विल आल्सो डू इट। This is the way that you will draw friction on the FBD. What about the third one? किधर बनाऊं मैं friction? Where is friction? Third वाले में where is friction? Third वाले में where is friction? Towards left, towards right, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं. Yes. It is ambiguous. Yes, it depends on F applied. आपको जब F applied का डायरेक्शन ही नहीं मालूम है, जब आपको F applied का डायरेक्शन ही नहीं मालूम है, तो आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं मालूम है। अगर F sin थीटा बड़ा हुआ T से तो लेफ्ट हो जाएगा, और अगर T बड़ा हुआ F sin थीटा से तो राइट हो जाएगा। This is the biggest lesson I want you to learn today, okay? That friction का direction is ambiguous in these cases. Let's come to these. यहाँ पे क्या होएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन? फोर्थ वाले में जहां पे भी मैंने राइट हैंड साइड में और लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वहां पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन एम्बिग्युअस होगा। एंड इट मेक सेंस। अगर सिक्स्थ वाले में mg f cos थीटा से बड़ा है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, तो वो जो इंटरमेशिंग है इसके नीचे से आने से रोकेगी, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। अगर f cos थीटा mg से बड़ा है तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, और जो इंटरमेशिंग है उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। सिमिलरली फिफ्थ वाले में अगर f cos थीटा mg sin थीटा से बड़ा है तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लगेगा, सॉरी इसका मोशन का टेंडेंसी ऊपर की तरफ होएगा, तो जो इंटरमेशिंग है उसको रोकने की कोशिश करेगी और फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा, राइट। सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज F अप्लाइड के ऑपोजिट होएगा फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ F अप्लाइड के ऑपोजिट होएगा फ्रिक्शन। And now we come to the weird part of magnitude. Magnitude बहुत ही weird. Weird तो नहीं है, खैर ठीक है। Okay. So the magnitude of the friction force, जिसके लिए मैं दो FBDs में एरो बना पाया, जिसके लिए मैं दो FBDs में एरो बना पाया, और जिसके लिए मैं बाकी के चार FBDs में एरो नहीं बना पाया because the direction of friction was ambiguous. The magnitude of this friction will depend on the magnitude of F applied. So not only is the direction of friction dependent on the direction of F applied, but the magnitude of friction is also dependent on the magnitude of F applied. Okay? अब ये dependence कैसे आ रही है? Let's see. ये डिपेंडेंस निकालने के लिए आई विल कैरी आउट ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग क्लास में बैठे होते तो मैं क्लास में करके दिखाता, बट अभी सब कुछ हॉट एक्सपेरिमेंट ही होना है। तो ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है और ये ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है सपोज।
ये ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम। अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा अभी, तो ये ब्लॉक में मेरे पास आएगा mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगी है, तो इसका मतलब कि n विल बी इक्वल टू mg, n विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं लगी है और इसका कोई एक्सेलरेशन है। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F। जैसे ही मैंने फोर्स F लगाया, यहाँ पे एक F अप्लाइड आ गया, because this is the surface, these are the interacting surfaces, therefore parallel to this surface there will be a force of friction and it will be opposite to the direction of F applied। यहाँ पे आ गया F, और ये मैं कैसे बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इस F को इस F के एप्लीकेशन के बावजूद। ओके, so if acceleration is 0, this implies that F is equal to F. This implies that F is equal to F. इसका मतलब हुआ that F applied is equal to magnitude is equal to the friction force। इसीलिए तो नहीं मूव कर रहा। माइक्रोस्कोपिकली इसका क्या मतलब हुआ, मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे, मैंने फोर्स यहाँ लगाया, लेकिन अभी ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए हैं, ना ऊपर वाले हुए हैं ना नीचे वाले हुए हैं। तो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, हाँ ग्रूव्स ब्रेक नहीं हुए हैं, तो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है इसने अभी मोशन को रोक के रखा हुआ है, मोशन अलाउ नहीं कर रहा। अब मैंने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, मैंने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन 0। So after increasing F, still acceleration is equal to 0। इसका मतलब F is still equal to F। इसका मतलब F applied का magnitude still equal to magnitude of friction force। But wait a minute, now this F is different। So since F is different, magnitude of F is different, therefore magnitude of friction force is also different। So if the value of F in this first case is equal to 3 Newton, friction is equal to 3 Newton. If the value of force in the second case is 5 Newton, then friction is also 5 Newton। You see, friction is a dynamic object. It is not a constant thing। It is an extremely dynamic। नहीं, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एरो बना के रखा है फ्रिक्शन, और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ। तो फ्रिक्शन इज ए डायनामिक ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है। ओके, एंड अगेन आई वुड लाइक टू प्लेस ए वार्निंग हियर that I am only talking about scenario 1, case 1। Case 1 is when one surface is stationary, one surface is non-movable, and scenario 1 is that the other surface is also not moving। So in this case, friction is a dynamic object,
its magnitude may change, its magnitude will change, right? And we call friction as a self-adjusting force. Self-adjusting force, ये आपको कुछ कुछ किताबों में ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन डायनेमिक है। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ पे ये ब्लॉक मूव करने लगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ पे ये ब्लॉक मूव करने लगा। So let me write that here. When magnitude of F is equal to 10 Newton, the block starts to move. हाँ, बिल्कुल सही. Exactly, Aryan. Very good. So this implies that maximum value of friction is equal to 10 Newton. फ्रिक्शन नंबर 1 डायनेमिक है, चेंज कर सकता है अपनी वैल्यू को, लेकिन फ्रिक्शन का एक अपर लिमिट है, एक मैक्सिमम वैल्यू, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो अगर मैंने यहाँ 11 न्यूटन की फोर्स लगा दी और फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है, मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन बेचारा केवल 10 न्यूटन लगा के रह जाएगा, और जो मैंने 11 न्यूटन एक्सटर्नल एजेंट में फोर्स लगाया है, 11 राइट में लगेगा, 10 लेफ्ट में लगेगा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का हो जाएगा, और ये ब्लॉक एक्सेलरेट करने लग जाएगा। एंड देन वी आर इन द रेल्म ऑफ सिनेरियो 2, केस 1, सिनेरियो 2। आया समझ में? यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 10 न्यूटन। तो जब मैंने ये फोर्स F लगाया इसके ऊपर और इसकी वैल्यू मैंने रखी 3 न्यूटन, फ्रिक्शन ने इसको मैच किया 3 न्यूटन, और ये ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिला। जब मैंने ये फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन कर दी, तो फ्रिक्शन ने भी अपने आप को 5 न्यूटन कर लिया और ये ब्लॉक को नहीं हिलने दिया। जब मैंने अपने फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन कर ली, तब भी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ने जो फोर्स लगाई वो उसको मैच किया 10 न्यूटन, और ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू मूव और जस्ट डज नॉट मूव। दोनों केसेस, दोनों मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं, क्योंकि 10 न्यूटन से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स भी लगा दी अगर मैंने, तो ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। 10 न्यूटन बाउंड्री कंडीशन, 10 न्यूटन पे ब्लॉक जस्ट डज नॉट मूव भी होता है, और 10 न्यूटन पे ब्लॉक जस्ट मूव्स भी होता है। दोनों केसेस, दोनों स्टेटमेंट्स से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू कैन डिस्क्राइब द सिचुएशन विद बोथ स्टेटमेंट्स। देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर। ब्लॉक जस्ट मूव्स, ब्लॉक जस्ट डज नॉट मूव, दे आर बोथ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। सो 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, फ्रिक्शन ने 10 न्यूटन मैच किया, एंड द ब्लॉक जस्ट डज नॉट मूव, और द ब्लॉक जस्ट मूव्स। इफ आई अप्लाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूं खुशी, मैंने आपको बताया कि F 10 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अब आर्बिट्ररी वैल्यू मैंने अपने मन से दी हुई। अब अगर मैंने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करने लग जाएगा, एंड वी विल बी इन द रेल्म ऑफ सिनेरियो 2, व्हिच आई विल डिस्कस लेटर। Therefore, I will only vary force from 0 to 10 Newton. That's it. उससे ज्यादा मैं करूंगा। ये 10 न्यूटन पे हो क्या रहा है? What is happening at this 10 Newton?
You go back to the first picture. What is happening at this 10 newtons? This or this is being broken. या तो ये टूट गया या ये टूट गया. हाँ, static friction is a self-adjusting force. Yes. अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स और लगा दी. 10 न्यूटन पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 0. 10 न्यूटन पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 0. अब मैंने इसके ऊपर 100 न्यूटन की और फोर्स लगा दी. ये रहा, मैंने इसके ऊपर 100 न्यूटन की और फोर्स लगा दी. Now what do you think will happen? What do you think will happen? जब ये 100 न्यूटन की फोर्स मैंने और लगा दी तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हुए? हाँ, वेरी गुड. यस 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 यस, गुड शिवेन, वेरी गुड. यस यस, intermeshing increases. Exactly, yes. And if intermeshing increases, then what happens here? Intermeshing nahi, Pratiksha, nahi. Intermeshing increases, then no, we will not say friction increases. Never say friction increases. We will say that the maximum value of friction increases. We will say that maximum value of friction increases. So on application of this force, intermeshing increases, therefore maximum value of friction increases. And exactly this is what was happening to you and the chair. अगर ये 100 न्यूटन लगाने के बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अगर 30 न्यूटन हो गया, तो अब ये F को मैं 0 से 30 न्यूटन भी वेरी करा दूंगा, तब भी ये फ्रिक्शन ये एक्सटर्नल फोर्स को मैच कर देगा. ये आ रहा है सबको समझ में? This is understood by all. This is exactly what was happening with the chair and you. If you keep the chair, just the chair, and try to move it, it's very easy to move because the maximum value of friction is very small. It is not as easy to move कि आपने उसको feather से touch कर दिया chair move कर जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होएगा. आप chair के ऊपर थोड़ी सी force लगाओगे तो शायद chair move ना करे, और मैं रोलर चेयर की बात नहीं कर रहा हूं. तो when you increase the force, then at some point of time the chair will move. But if you sit on it and if you ask somebody else to apply the force, or if you make somebody else sit and then you apply the force, then you will find that the force required to just move the chair has drastically increased. Okay, right? So if I apply this 100 Newton force, if I apply this if I apply this 100 Newton force, okay, if I apply this 100 Newton force, then what has changed? क्या चीज चेंज हो गया? ये FBD में क्या चीज चेंज हो गया? ये FBD में क्या चीज चेंज हो गया? येलो से बना दे रहा हूं इसमें. यहाँ पे एक प्लस 100 न्यूटन आ गया, राइट? और अगर यहाँ पे प्लस 100 न्यूटन आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई? mg प्लस 100 हो गई. हाँ, राइट? mg प्लस 100 हो गई नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू. अब अगर मैं यहाँ पे 1000 न्यूटन कर दूंगा तो क्या होएगा?
n की वैल्यू mg प्लस 1000 हो जाएगी, राइट? और फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 10,000 कर दूंगा तो n की वैल्यू mg प्लस 10,000 हो जाएगी और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ that maximum value of friction is proportional to the normal reaction. Because if you think about it, it is the normal reaction which is actually measuring the intermeshing between the two surfaces. जब नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस 100 हो गया तो आपने बोला कि इंटरमेशिंग इंक्रीज कर गई है। यस, इट हैज इंक्रीज। जब ये नॉर्मल रिएक्शन और बड़ा हो जाएगा तो इंटरमेशिंग और इंक्रीज कर जाएगी। A normal reaction is really measuring the level of intermeshing between the two surfaces, and the level of intermeshing between the two surfaces is what decides what the maximum friction force can be. Remember, friction is a dynamic object. It cannot only self-adjust its own magnitude, but its maximum value is also not fixed. It may be different in different situations. So if f max is proportional to n and I want to remove this proportionality sign, I will just have to add a constant, and the constant that I add will be called mu s, where mu s is the coefficient of static friction. Okay, ये important statement है, but remember, okay, and you will tend to forget, and whenever this happens, please remember, this is just the maximum value of friction force. It is not the value of friction. It is the maximum value of friction force. So the magnitude of the friction force varies or can vary between 0 and mu n. And again, I will write here case 1, scenario 1. केवल इसी के लिए applicable है ये. Okay, right? यूएस क्या होता है? अच्छा, म्यूएस बोल रहा है क्या आर्यन? नहीं नहीं नहीं, हाँ, फ्रिक्शन कैन बी 0, यस। आप कुर्सी को चुपचाप किनारे छोड़ दो, फ्रिक्शन 0 है उसके ऊपर। म्यूएस इज ए प्रॉपर्टी डिपेंडेंट, इट इज समथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द सर्फेसेस। हार्दिक क्या पूछ रहा है? अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको थप्पड़ मार दूं तो आपको जो फोर्स लगेगा वो आपके नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल थोड़ी ना होएगा, वो तो मेरे हाथ पे डिपेंड करता है ना, और मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है। The maximum value of friction force will be proportional to m. Maximum value, but friction does not have to be that maximum value. क्या resistance always opposes motion, or is that also air resistance की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं, air resistance always opposes. Air resistance always opposes. Well, it have you ever heard of have you ever been on a flight to Delhi और नॉर्थ इंडियन सिटी? कोई भी नॉर्थ इंडियन सिटी पे फ्लाइट पे गई है प्रतीक्षा? हाँ, एग्जैक्टली राइट।
So when you are going to the North Indian city, you will find that you arrive there very fast, but while coming back, it's a very big pain. वो जो है बड़ा time लगता है. Yes, it can actually help. Yes. That case, I will not call it air resistance. हेलो। हाँ बोलना हार्दिक. हाँ सर, जब वो रेस्ट पे होगा तब तो जो उसके ऊपर अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इज इक्वल टू फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन नहीं कांस्टेंट है, इनटू एन होता है, तो नहीं. मैं बोल रहा हूँ 9th 10th वाला भूल जा मेरे भाई. क्यों उस पे लटक के जो है टांग के, मेरे को भी टांग रहा है. अगर तेरे सामने तेरा बेड रखा है तो उस पे क्या फ्रिक्शन है? म्यू एन। नहीं है, जीरो है. बेड को जाके धक्का देगा तब उस पे फ्रिक्शन लगेगा. अच्छा, ठीक है सर। है ना? अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ राइटिंग. Okay, so now coming back to this magnitude, I told you it will depend on F applied, and this is how it will depend. If magnitude of F applied is less than mu n, then the force of friction is equal to F applied magnitude. And if F applied is greater or equal to mu n, then the force of friction is equal to mu. तो जब तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन, जब तक एफ अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम रहती है, तब तक फ्रिक्शन एफ अप्लाइड को मैच करता है. और अगर एफ अप्लाइड फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को मेंटेन करेगा. बस अब उसके आगे वो डायनामिक नहीं रहेगा, वो फिक्स्ड होगा. और हम केस 1 सिनेरियो 2 में चले गए. ठीक है, ये आया समझ में? इफ एफ अप्लाइड इज 0, जैसे अभी हार्दिक पूछ रहा था, इफ एफ अप्लाइड इज 0 then friction is 0. If F applied is 1 Newton, friction is 1 Newton. If F applied is 2 Newton, friction is 2 Newton. If F applied is 3 Newton, friction is 3 Newton. If F applied is 4, friction is 4. If F is 5, friction is 5. When F is 10, then friction is 10. But when F is 11, then friction is 10 only. हाँ, जब ब्रेक, हाँ, yes, प्रतीक्षा, yes. तो जब ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे एक बार, और जब ये ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, तो इंटरमेशिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा उसको फिर से. तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी. एंड दैट इज केस 1 सिनेरियो 2 where we talk about kinetic friction. Okay, that we won't talk about today, but okay. So now coming back to this, very careful, very careful. I will write the question in a new slide. For parts, मैंने पार्ट लिख दिया, sorry. For parts 1 and 2, find F so that the block
just moves, or I could have written just does not move, the coefficient of static friction is equal to mu. Remember, block just moves or block just does not move. का मतलब acceleration 0. So let me tell you the sequence of events. I'll go to a new slide. Draw FBD without friction. Find F applied. Draw friction on FBD. Find N. Apply second law. Right? पहले FBD बनाइए, F applied निकालिए. ये दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Draw friction on FBD, find normal reaction, and apply second law. पहला वाला मैं करके दिखाऊं. FBD without friction. F applied ये F है. Friction should be opposite. Just moves लिखा हुआ. Okay? Just moves. This means that value of F is definitely mu n. N is equal to mg, since no acceleration along y-axis.
So along x-axis, f is equal to mu n is equal to एक पहला वाला था बहुत आसान है, सेकंड वाला ट्राई करिए, ट्राई द सेकंड वन, सेम प्रोसीजर, टेल मी द आंसर. आंसर में एफ नहीं आ सकता बेटा. Answer will be only in terms of mg mu theta. Very good, Aryan. Very good. Yes. नहीं, महक गलत किया है, चेक करिए फिर से. आर्यन ने सही किया है, अनीश ने सही किया है. वेरी गुड. अनीश देख नीचे डिनोमिनेटर में गलती किया है. नहीं सॉरी, पार्थ ने गलती किया. डिनोमिनेटर में देखो पार्थ, डिनोमिनेटर में n नहीं आएगा ना. वेरी गुड चैतन. यस. बहुत बढ़िया खुशी. यस यस गुड. So FBD is already drawn, right? FBD तो आप पहले बना चुके हैं. N mg f f और ये हमारा एक्सिस है. थीटा f cos theta f sin theta. So we will have along the y-axis n is equal to mg minus f sin theta. We've already done this. Now x-axis पे f cos theta will be equal to mu n. Since just moves question में दिया है, so f cos theta is equal to mu into mg minus f sin theta. F cos theta is equal to mu mg minus mu f sin theta. So f cosine theta plus mu sin theta is equal to mu mg. F is equal to mu mg upon cos theta. आया समझ में ये? This is understood. ये लिखा हुआ क्या? तूने m नीचे लिखा था ना? नहीं.
ओह, चलो भैया मैं अब यहाँ रोक रहा हूँ. I will stop here. What I am going to discuss in the next class, and you can, if you want, you can do it पहले से. Yeah. What I'm going to discuss in the next class is max and min values of f, so that block just sorry, excuse me. This I'm going to do in the next class. If you want, you can do it previously. पहले से करके कल शाम से पहले कर सकते हैं. ठीक है. And tomorrow, after we have done this, then I'll talk about the case one, scenario two, when the things actually start moving. Ironically, that is easier than this. हाँ बिल्कुल, अब पढ़ो ना, बुकलेट से पढ़ो या उससे. But booklet वाली theory या HC वर्मा वाली theory will be drastically different from what I'm teaching, and you will be able to tie everything up once I have finished. क्योंकि मैंने दूसरे एंगल से पढ़ाया है, उसमें दूसरे एंगल से लिखा हुआ है. ठीक है भाई, चलो, we'll meet tomorrow, and ये सबको समझ में आ गया ना? Anybody who is not understanding, please tell me. Anybody who is not understanding, please do tell me. सबको आ रहा है समझ में? हाँ भाई, तुलिका कुछ बोल ही नहीं रही है. समझ में आया तुलिका? ओके, चलो. सो आई विल स्टॉप द थिंग हियर. इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना? आई हैव टू एंड द मीटिंग, और डू आई हैव टू, क्या करना है? यू डोंट हैव अ क्लास आफ्टर दिस, राइट? क्लास है यार इसके बाद. यस सर, नो सर, क्या कर रहा है? ठीक, चलो, बाय बाय. I'll see you guys tomorrow.